Either all of you are asleep or all of you have moved somewhere else after marking your presence, or you are doing something else at this time. Excellent. Very good, Natiba. Heterochromia, iris nodules, very nice. Very nice. Good. What else? IOP, yes. What IOP? What about IOP? Hmm. Anything else? IOP increase. Okay, that's nice. Anything else? What are the symptoms with which the patient presents to you? What is the main symptom of intermediate uveitis? Good. Posterior synecdoche also. Very nice, Mutiva. You have done well. Well, remember that the patient with intermediate uveitis will always present with floaters, with history of floaters and diminished vision. And on examination, you would find keratic precipitates, mild reaction in anterior chamber, and the vitreous shows condensations, and there are cells in vitreous, and there are uh, slow banking at the peripheral iris. There is vascular sheathing, which is a sign of vascular inflammation that leads to peripheral retinal ischemia, which further leads to development of new vessels. These new vessels then they rupture and they bleed, which cause vitreous hemorrhage, and repeated vitreous hemorrhages lead to fibrosis, contractures, retinal detachment, and ultimately phthisis. So today we are going to start off with posterior uveitis. Now the posterior uveitis is the inflammation of the choroid basically, and there are basically three different types of posterior uveitis. One is focal. You may find a single well demarcated lesion in the choroid, and this is typical of toxoplasmosis. Or it may be multifocal, in which there are more than two or more than two lesions involving the posterior uvea or the choroid. And diffuse, as the name shows, it is diffuse involvement of the retina, which is typically seen in cytomegalovirus infections. The patient presents with history of diminished vision, pain, and the anterior chamber signs like cells, flare, and KPs are very mild. KPs may be present, especially in granulomatous uveitis, but the bulk of the signs are limited to the posterior segment. There may be vitritis. What is vitritis? Vitritis means there is inflammatory reaction in the vitreous cavity comprising of cells and condensation and precipitates. So there may be vascular sheathing, which is a sign of vasculitis. Now, choroiditis is the inflammation of choroid. Now, in the case of acute choroiditis, you have a healthy retina overlying the choroid. So, an acute lesion appears as a yellowish or grayish yellow with well demarcated borders, and it is deep to the retina. With the passage of time, the retina also gets involved, and the inflammation leads to fibrosis and damage to the choroid. So its color changes from yellowish gray to white with pigmented border, and the overlying retina is also becomes atrophic. Retinitis per se very rarely develops independent of the choroiditis. Usually the choroiditis and retinitis goes hand in glove. Whenever there is
choroiditis, there is an element of retinitis, and vice versa. So the acute lesion or acute retinitis appears as grayish or cloudy lesion with indistinct borders, and the vessels crossing these lesions becomes obscured. Why? Because once the retina becomes inflamed, it becomes edematous, and the vessels they get buried into that swollen edematous retina. Similarly, as an intermediate uveitis, there is an element of vasculitis, which is seen as a perivascular sheathing, and in certain cases, especially where there is granulomatous inflammation, this sign is very much obvious, and there is a thick sleeve of greasy perivascular cuff or a tissue which is known as candle wax dripping. Now, if untreated, what does posterior uveitis leads to? If it is not treated properly, the posterior uveitis may leads to maculopathy, which may be direct because of the direct involvement of the lesion. For example, in toxoplasmosis, there is direct macular involvement. So, or the inflammation in other parts of the retina leads to edema of the macula, which is known as cystoid macular edema. There may be formation of epiretinal membrane, macular ischemia, since there is vasculitis, so that leads to ischemia and development of nevascularization, which may be limited to the choroid or may even involve parts of the retina. These vessels, once they lead to retinal detachment. Prolonged retinochoroiditis ultimately leads to atrophy of the retina. And since the retina is once the retina becomes atrophic, it conjunctively leads to optic atrophy. So a pale whitish optic nerve head is visible. And in case of long-standing uveitis or choroiditis, ultimately the ciliary body stops producing aqueous humor and the eye goes into phthisis. And the eye goes into phthisis. Similarly, band keratopathy is also a sign of chronic inflammation. Band keratopathy is development of a whitish superficial lesion involving the central cornea. So, these are the complications which develop in a case of long-standing posterior uveitis. Now look at this picture. The picture on your right, this one, it shows a well-defined lesion involving the posterior pole exactly at the macula. So this person would have severe drop in his or her intraocular inner vision. Now, you see, the lesion is pigmented, which shows that it is an old lesion. And if you look at the edges of the lesion, especially the temporal edge, you find that there is a yellowish patch which shows recent activity. So here you can see this is a pigmented area which is an old lesion, and there is activity. So you see this is an acute patch of retinochoroiditis and this is an old patch. Now here you can see this is a picture in which I want to show you vascular sheathing. You see, in the case of intermediate uveitis, this sheathing was limited to the peripheral retina, but here this sheathing has
extended almost up to the optic nerve. Now look at this picture. There the vessels are surrounded by perivascular sheathing. So here you can see perivascular sheathing, and in case there is these are areas of hemorrhages. As I told you, there in long-standing choroiditis there is neovascular choroidal neovascularization which leaves, and this is how it appears. Areas of hemorrhages, and the optic nerve is swollen, and you see areas of pallor have already started appearing here. So this is the case of posterior uveitis. Now you see in the hair you can see these new vessels, as I have told you earlier also, and this is a typical picture of hyphus. In case of long-standing choroiditis, the vitreous, the aqueous humor is, there is no more formation of aqueous humor, so the eyeball becomes soft and it's sunken, and this is called hyphus. Now, what are the differential diagnoses of a case of uveitis? Uveitis, the differential diagnosis is basically that of a red eye. Whenever a person comes to you with red eye, remember 3 or 4 conditions which you must rule. One is acute conjunctivitis, which is the inflammation of the conjunctiva. Then keratitis, which is acute inflammation of the cornea. It may be a corneal ulcer or diffuse corneal inflammation. So, and the third is acute angle closure glaucoma. As you must have read, there are 2 types of glaucomas, open angle and narrow angle. So the narrow angle or closed angle glaucomas present as an acute case with severe pain and red eye. So whenever a person presents to you with painful red eye, you must always rule out acute attack of angle closure glaucoma. And the fourth one is definitely uveitis itself. Now in uveitis, the redness would be more marked in case of anterior uveitis as compared to posterior uveitis. Another clinical thing which you must differentiate in case of uveitis is a white pupillary reflex. As I have told you, in intermediate uveitis, there is condensation which may gets deposited on the posterior lens surface, giving rise to a white pupillary reflex. Or in long-standing retinal chorioretinitis, there may be retinal detachment, which appears as a white pupillary reflex. And last but not least is glaucoma, open-angle glaucoma. As you know that uveitis, especially anterior and intermediate uveitis, leads to a rise in intraocular pressure because of the clogging of the trabecular meshwork, because of the inflammation of the trabeculae in the meshwork, or because of the development of synechia, which leads to iris bowing and closure of the angle. So all these things, they lead to development of glaucoma. So whenever a person comes to you with red eye or with a history of uveitis, you must exclude or differentiate these 4-5 conditions. Investigations. How do we investigate a case of uveitis? Now, uveitis has a long list of underlying conditions. These conditions are, a few of them are well defined, and in large number of cases we may not find a definite cause. So basically the
Investigations are guided by the symptoms, especially the systemic features associated with uveitis. However, just to sum up and to make a list of the clinical features that lead to uveitis, that may cause uveitis, I have tabulated certain investigations which would help you in narrowing down your diagnosis. So, blood sampling picture, erythrocyte sedimentation rate (ESR) always gives you a hint that whether it is a chronic inflammation or an acute. C-reactive proteins, it gives you hint about the infectivity or otherwise of the inflammation. Syphilis is very common, and the tests which are usually done for syphilis are VDRL, PPH, and treponema, treponemal antibody tests. Serum angiotensin converting enzyme. This is done for toxoplasmosis, RA factor, anti-nuclear factor, anti-neutrophil cytoplasmic antibody test. All these tests will point towards an autoimmune nature of the illness. Quantiferon gold test is done for tuberculosis, and we can also get a lot of help in diagnosing tuberculosis by X-ray test, which not only helps us to diagnose tuberculosis but also sarcoidosis and other conditions. X-ray sacroiliac joint, well, you know, ankylosing spondylitis is a very common cause of uveitis. So, sacroiliac joint gives us a clue about the ankylosing spondylitis. Mind you, the radiological changes in sacroiliac joint appears much before any clinical sign or symptom involving the sacroiliac joint. So you can actually modify the disease if you diagnose it. Aqueous tap and then performing different tests like PCR tests for viral genetic material, microscopic culture, etc. They are also helpful. Conjunctival biopsy is also helpful in cases of chronic conditions. Now, the treatment. So, as you know, that the main classification of uveitis is either it is infective or non-infective. In both the cases, the the prime objective is to control the inflammation, whether it is immune mediated or it is infective inflammation secondary to certain infections. We must control, because if this inflammation causes damage to the retina, then we will lose, there will be an irreversible loss of vision. So, the anti-inflammatory medication is the mainstay of treatment, and the most potent anti-inflammatory agent available to us is corticosteroids. These steroids can be used as drops, topically, or ointments. The ointments are usually used at bedtime, and they provide prolonged release of medicine. So, since the person is sleeping at night and if he or she instills ointment, then he will have delivery of steroids continuously throughout the night. Steroids can also be given by periocular injection, which is subconjunctival or posterior subtenon, which is given at the in a plane between conjunctiva and sclera posteriorly. We can also give steroids orally or parenterally. And remember, whenever we give steroids orally or parenterally, they are always given in a tapered fashion. Uh, Whenever we give steroids orally, we must keep in mind that these leads to severe gastritis. So we must give patients some sort of
anti-peptic ulcer medication like omeprazole or pantoprazole or medicines like that. Uh, Nowadays, uh, steroids can also be given intravitreally. For example, triamcinolone is a uh, slow depot release steroid which is given by an intravitreal injection or by placing a small slow releasing corticosteroid devices. For example, Azerdex is a device available which is basically a release dexamethasone implant which is implanted or placed into the vitreous cavity from where it gradually, slowly, continuously releases steroids right at the lesion. Cycloplegics, as you know, cycloplegics are very crucial because they relieve ciliary spasm, so they help in relieving the headache associated with it. They prevent development of adhesions, which is synechia formation, or if the synechia have already formed, they help in breaking those synechia. So cycloplegics are very important. Uh, the least or the mildest of the cycloplegics is tropicamide, which is basically pupillary dilating medicine, which is called mitriacis, and it has very little cycloplegic effect. But the duration of action is few hours. Then we have cyclopam, which releases it is a cycloplegic as well as the mitriatic, and its action lasts for about 2 to 3 days. And atropine is the strongest cycloplegic agent. Its effect lasts for almost 2 weeks. So a single drop of atropine can knock down the ciliary muscles for good about 2 weeks. Non-steroidal anti-inflammatory medication is also very effective. For example, naproxenic acid and diclofenac sodium. So, flubiprofen. These medicines are given both topically as well as orally. And the advantage of naproxenic acid is that it has a very good penetration, and even if given topically, traces of medicine are present at the posterior segment around the macula. So this is a very effective medication. But as you know, steroids leads to a lot of side effects, both locally as well as systemically. The local side effects, the commonest of the local side effects is raised intraocular pressure leading to glaucoma, and the systemic side effects include osteoporosis, peptic ulceration, deranged diabetes, and uncontrolled hypertension, etc. etc. So, in all these conditions, or in conditions where steroids alone fail to achieve the target or the fail to control the inflammation adequately, and we presume that if it is not controlled adequately, it will lead to gross visual deterioration. In such cases, we use steroids. So, steroids are used in sight-threatening, non-steroidal medication are used in sight-threatening complications or as a steroid-sparing medicine. A number of them are used, for example, methotrexate, chlorambucil, chlorambucil, mycophenolate, mofetil, azathioprine, etc. Cyclosporine. Cyclosporine, by the way, is available both injectable form and as topical drops. Cryotherapy. Cryotherapy is a procedure in which we apply extreme cold temperature, which leads to, which results in freezing of the choroid and retina. So we repeat the cycle of freeze, thaw, and then freeze, which leads to destruction of the choroid and the retina. And this is used effectively in cases of intermediate uveitis or cyclitis.
So to treat peripheral neovascles, to treat peripheral vascular sheathing, and to treat candle wax dripping, and to treat this snow banking, it is applied around the peripheral retina and the ciliary body. And its advantage is that it is free from all the systemic side effects which are associated with steroids and steroid-sparing medication. The peripheral blood retinal lesion can also be destroyed not only by cryotherapy or extreme freezing but by laser. And these ischemic areas are identified by performing fluorescein angiography, and then laser is applied. Pars plana vitrectomy. The pars plana vitrectomy is a procedure in which we make a small hole at the pars plana portion of the ciliary body, introduce a small port into the vitreous cavity, which cuts and sucks out all the vitreous. So in case, because vitreous is avascular and it is very difficult to deliver the drug in the vitreous, hence once there is vitritis or vitreous inflammation, it takes a very long course and it keeps on destroying the vision by causing retinal macular edema and optic nerve edema. So in cases of prolonged persistent vitritis, we make a small hole in the pars plana, introduce a small cutter which cuts the vitreous into very small bites and sucks it out. So in that way you remove all the unhealthy vitreous and thereby reduces the inflammation. So this was all about the, as yet we have studied the non-specific conditions which cause uveitis. We have as yet studied what is anterior uveitis, what is intermediate uveitis, and what is posterior uveitis. So now if you want to ask anything or if there is anything which is not clear to you in whatever we have studied as yet, you may please ask me so that I should clarify it before proceeding to specific conditions, specific entities which cause uveitis. Yes, anything which you want to ask, you can ask me. Okay, candle wax drippings. Let me show you a picture if I can find one, and then I will. Now you see, Motiva, if you look at this picture, yeah. Now you see, this is a blood vessel, and there are exudation around the wall of this blood vessel. आपको ये blood vessel के कितने ये yellowish lesions नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये सब, ये क्या है? ये एक्चुअली हुआ ये है कि ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन हुई है. जब इन्फ्लेमेशन हुई है तो ब्लड वेसल में से इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो निकल कर ब्लड वेसल वॉल और उसकी सराउंडिंग इर्द गिर्द जमा हो गए. तो ये जो जमा हो जाते हैं जब ये एक्सुडेट, तो ये एक इन कॉन्टिन्यूटी भी आपको एक लंबी सी एक लाइन नजर आ सकती है और आपको सेगमेंटल लीजन भी नजर आ सकते हैं, स्किप लीजन जिसे हम कह सकते हैं. ये देखें, लुक एट दिस, देयर इज अ लीजन इन्वॉल्विंग हियर, देयर इज अ segment of the vessel which is involved and then there is a non-involved portion. Similarly यहाँ पर देखें, ये एक आपको एरिया नजर आ रहा है इन्वॉल्वमेंट का, फिर ये रिलेटिवली नॉन इन्वॉल्व एरिया, फिर ये इन्वॉल्व एरिया. सो ये जब
एक्सुडेशन बहुत मार्क्ड हो जाती है, तो ये ऐसे लगता है जैसे कैंडल्स, जो मोमबत्ती होती है उसकी जो ड्रिपिंग्स होती हैं, एज इफ दीज आर दी ड्रिपिंग्स ऑफ दी कैंडल वैक्स. सो बहुत वेरी थिक पेरीवास्कुलर शीविंग इज नोन एज कैंडल वैक्स ड्रिपिंग. मेडिकल साइंस में एक ये बड़ी बीमारी है कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को, जो हमारी रोज़मर्रा लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे सिनोनिमस करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो सिवियर एक्सुडेशन ऑफ वेसल्स and perivascular sheathing is said to mimic candle wax dripping. तो ये जो है ना, ये severe perivascular sheathing को candle wax dripping है. I hope I have made myself clear. Anything else which you want to ask? Okay, so now we will start off with few specific conditions which cause uveitis. Now, one of an interesting condition is Fuchs uveitis syndrome, FUS. Now, Fuchs uveitis syndrome is a condition which is non-granulomatous and chronic, and it primarily involves the intermediate uvula, which is ciliary body and pars plana and the peripheral retina. तो ये इस एरिया की पार्स प्लाना और पेरिफेरल रेटिना की इन्फ्लेमेशन है, नॉन ग्रैनुलोमेटस टाइप की, जिसे हम कहते हैं फुक्स यूवेइटिस सिंड्रोम. अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि in contrast to a typical case of anterior uveitis, where, as I have told you, that the individual develops adhesions between the iris and the lens. In this condition, patient never develops any adhesion. So, absence of synechia is a typical feature of Fuchs uveitis syndrome. It typically involves young individuals, roughly around the age of 40, and the patient would come to you not with complaints related to uveitis, but with complaints related to the complications of uveitis. So, जब आपके पास पेशेंट आता है तो वो आकर कहता है जी मेरी विजन ड्रॉप कर गई, and once you look at the eye you see that there is a cataract. Now cataract is a complication of uveitis, as I have told you earlier. So there is cells in the anterior chamber. There are creatic precipitates which we call KPs on the corneal endothelium. Then I told you that KPs in case of anterior and intermediate uveitis are usually distributed in a triangular fashion involving the inferior half of the cornea. But typically in Fuchs uveitis syndrome, these KPs are distributed evenly all along the cornea. आपको सारे कॉर्निया में नजर आएंगे स्कैटर्ड, किसी खास एरिया में आपको ये नहीं नजर आएंगे. सेकंड, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे आर स्मॉल, दे आर नॉट लार्ज केपीज, दे आर स्मॉल ग्रेइश वाइट केपीज विद वेल डिफाइंड मार्जिन. और ये सारे थ्रू आउट the corneal endothelium में diffusely scattered होंगे.
एंटीरियर चैम्बर में सेल्स भी आपको नजर आएंगे और फ्लेयर भी नजर आएंगे। अगर आपको रिकॉल करें तो मैंने आपको सेल्स और फ्लेयर को डॉक्यूमेंट करने का या ग्रेड करने का तरीका भी बताया था कि +1, +2, +3 इस तरह करके आप सेल्स को भी ग्रेड करते हैं। यू काउंट द सेल एंड यू ग्रेड देम अकॉर्डिंगली। सिमिलरली जो फ्लेयर है उसकी डेंसिटी को आप देखते हैं और जितनी ज़्यादा डेंस हो उतने ज़्यादा प्लसेस लगाकर आप उसको इंडिकेट करते हैं। तो फुक्स यूवेइटिस सिंड्रोम में बड़ी थिन सी फ्लेयर होती है, +1 हार्डली, और जो सेल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, दे आर हार्डली +1 और मैक्सिमम +2। चूँकि ये इन्वॉल्व करती है इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द यूविया, तो इसलिए इसमें एंटीरियर चैम्बर के एंटीरियर सेगमेंट के जो सिम्टम्स हैं वो रिलेटिवली माइल्ड है। एक और फीचर जो इस कंडीशन का स्पेसिफिक है वो है प्रेजेंस ऑफ आइरिस नोड्यूल्स, विच वी हैव स्टडीड। आपको मैंने बताया था कोपीज नोड्यूल होते हैं जो पिपिलरी मार्जिन पर होते हैं और बुसाकस नोड्यूल होते हैं जो स्ट्रोमा में। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये नोड्यूल्स जो हैं दे आर यूजुअली सीन इन ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। However, Fuchs uveitis syndrome, although it is a non-granulomatous inflammation, but yet it shows Koppes and Busaka's nodules. आपको टाइनी रिफ्लेक्टाइल शाइनी क्रिस्टल्स भी आयरस के ऊपर नजर आते हैं, which are known as Russell's body. चूंकि there is chronic smoldering inflammation of the iris, as a result जो आयरस की फीचर्स हैं यानी कि उसके ऊपर क्रिप्स होती हैं, उसकी जो शार्प उसके ऊपर फीचर्स होते हैं, जो कॉलरेट होती है, ये सारे फीचर्स जो हैं ये ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आयरस अपीयर्स एज अ फीचरलेस और स्मूथ स्ट्रक्चर। सेकेंडली, जब ये प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन करती है आयरस की तो डेफिनेटली जो पिगमेंट एपिथेलियम होती है विच इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आयरस उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। नतीजा क्या होता है कि आयरस का कलर चेंज हो जाता है एंड दिस इज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड heterochromia iridum, heterochromia, which is a change in the color of two iris. इसको अगर आपने अप्रिशिएट करना हो तो डे लाइट इज द बेस्ट लाइट टू अप्रिशिएट इन माइल्डर केसेस। तो इसमें आप जब पेशेंट देखेंगे तो उसकी दोनों आईज का कलर डिफरेंट होगा। तो दिस इज यूनिक कंडीशन जिसमें ये नॉन ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है मगर इसमें फीचर्स ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के भी हैं। इसके अंदर इन्फ्लेमेशन है विच इन्वॉल्व्स द इंटरमीडिएट यूविया एंड आयरस, और जिसकी वजह से इसके अंदर कलर की चेंजेस आती हैं। इसके अंदर केपीज हैं बट अनलाइक अदर यूवेइटिस केपीज की डिस्ट्रीब्यूशन और साइज फर्क है। इसके अंदर इन कंट्रास्ट टू अदर यूवेइटिस साइनिकिया नहीं है। तो आप इमेजिन करें कि अगर एक इंडिविजुअल को स्मोल्डरिंग लो ग्रेड यूवेइटिस है जिसकी वजह से सेल्स और केपीज है उसकी आंख में एडिमा डेवलप हो, अदरवाइज तो उसकी विजन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर क्या होगा, जब ये लंबा अरसा ये इन्फ्लेमेशन रहेगी तो अल्टीमेटली उसकी आयरस का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर उसकी
जो लेंस है उसकी न्यूट्रिशन सफर करेगी और कैटरेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ट्रेबेकुलर मेशवर्क की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ग्लाकोमा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ग्लाकोमा तो पेशेंट इसमें जो आपके पास जब आता है तो वो कभी भी एक्यूट और स्टेज में नहीं आता, वो अमूमन आता है जब उसको या कैटरेक्ट डेवलप हो चुका होता है या ग्लाकोमा डेवलप हो चुका होता है, और फिर जब आप उसको एग्जामिन करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स नजर आते हैं। उसकी विट्रियस में भी आपको थोड़े बहुत सेल्स नजर आते हैं विच आर लिमिटेड मोस्टली टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द विट्रियस। Gonioscopy. Gonioscopy is a technique or a procedure which is used to examine the angle of anterior chamber. तो जब हम गोनियोस्कोपी करते हैं तो हमें एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर पर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स नजर आती हैं और फ्यू पेरिफेरल एंटीरियर साइनस की नजर आती है, बट दे आर वेरी फार एंड फ्यू। ठीक है, तो इसकी डायग्नोसिस जो है वो बेसिकली क्लिनिकल है, क्लिनिकल बेस्ड ऑन साइंस ऑफ uveitis with complications including cataract and glaucoma and absence of posterior synechia and presence of diffusely scattered teeth। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको आप एक्सीडेंटली पिकअप कर लेते हैं इन एन एक्यूट केस, और आप देखते हैं कि कोई इसमें साइनिकी नहीं है, देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ uveitis, then what you need to do, what all you need to do is to monitor, keep that person under examination, उसको कंटिन्यूसली बुलाकर चेक करते रहें, उसका इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करते रहें, उसके रेटिना को देखते रहें और उसकी ग्लाकोमा को मैनेज करते रहें, विट्रियस एक्टिविटी को देखते रहें। इन केस अगर आपको लगे कि नहीं अब एक एक्यूट एक्सेसरबेशन आई है, वो आपको कैसे पता चलेगा? वैसे पता चलेगा कि एंटीरियर चैम्बर में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, केपीज बढ़ जाएंगे, विट्रियस में सेल्स बढ़ जाएंगे, पेशेंट थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन करेगा, थोड़ी सी फोटोफोबिया की कंप्लेन करेगा। सो देन इन सच कंडीशन यू कैन गिव शॉर्ट टर्म स्टीरॉइड ताकि इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन हो। क्योंकि इसमें साइनिकी नहीं बनते इसलिए हम इसमें ना कोई मेट्रेटिक देते हैं ना कोई साइक्लोप्लेजिक देते हैं। पेशेंट आता है या ग्लाकोमा के साथ या कैटरेक्ट के साथ, तो अगर ग्लाकोमा के साथ आए तो फिर उसको हम मैनेज करते हैं एज अ केस ऑफ ग्लाकोमा। अब इसमें कैच ये है कि जो मेडिसिन like steroids which is used to control inflammation वो inversely intraocular pressure को rise करती है, so we have to be very careful in balancing the dose of steroids and the side effect or the effect on intraocular pressure। so अगर पेशेंट आपके पास ग्लाकोमा के साथ आएगा तो आप उसको ग्लाकोमा की मैनेजमेंट करेंगे जिसमें ऑकुलर हाइपोटेंसिव मेडिकेशन देंगे, अगर वो काम नहीं करेगा तो सर्जरी करेंगे, अगर वो नहीं करेगा तो आर्टिफिशियल ग्लाकोमा ड्रेनेज डिवाइसेस आएंगे वो इंस्टॉल करेंगे। नंबर 2, पेशेंट आपके पास आएगा कैटरेक्ट के साथ, तो अगर वो कैटरेक्ट के साथ आएगा तो उसमें देखें अगर तो माइल्ड कैटरेक्ट है तो यू कैन ऑलवेज वेट डिपेंडिंग कि उसका विजन ठीक है एंड परफॉर्मिंग हिज रूटीन। अगर उसका विजन कम हो गया है और उसका कैटरेक्ट बढ़ गया तो फिर हम क्या करेंगे? वी गो फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। नाउ कैटरेक्ट सर्जरी इन सच पेशेंट इज अ हाई रिस्क सर्जरी। व्हाई? क्योंकि ऑल्दो इसमें साइनिकी नहीं बने होती मगर इसमें जो डायलेटर प्यूपिल है वो डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से प्यूपिल नहीं डायलेट होता। अब आप छोटे से प्यूपिल से कैटरेक्ट को निकालना बड़ा मुश्किल है। फिर एज यू नो दैट देयर आर स्मॉल ब्लड वेसल्स एट द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर
तो जब आप सर्जरी करने लगते हैं तो वो वेसल्स, सिंस दे आर एबनॉर्मल वेसल्स, दे स्टार्ट ब्लीडिंग, तो आपके एंटीरियर चैम्बर में ब्लड जमा हो जाती है। इसी तरह जो जोन्यूल्स हैं जो कि लेंस को सीरी प्रोसेसेस के साथ बांध के रखते हैं, वो जोन्यूल्स हैं आधे तो डैमेज हुए होते हैं, जो नहीं डैमेज हुए होते हैं वो बड़े वीक होते हैं। तो जब आप सर्जरी कर रहे होते हैं तो चांसेस ऑफ सबलेक्सेटिंग द लेंस इनटू द विट्रियस आर वेरी हाई। ठीक है। इसी तरह जो आपका यूवियाइटिस है यानी कि इन्फ्लेमेशन है, वो भी सर्जरी के बाद एक्सेसरबेट कर जाती है। तो although in the treatment is to remove cataract, but the incidence of complications is very high. तो अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने जब भी कैटरेक्ट सर्जरी करनी है तो आपने पहले से स्टीरॉयड स्टेप अप कर देने हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करनी है और उसको बताना है कि जी ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए पहले से आपने प्रिपेयर होकर रखना है। फॉर एग्जांपल अगर प्यूपिल डायलेट नहीं हो रहा तो आपने आयरस हुक्स रखनी है जिनके जरिए आप मैकेनिकली प्यूपिल को खींच के बड़ा कर लें। अगर आपको है कि जोन्यूल्स वीक है और ये ब्रेक कर जाएंगे तो फिर इसके लिए एक होता है CTR रिंग होता है, एक रिंग होता है जिसको आप लेंस के बैग में डाल देते हैं जो कि स्ट्रेच करके लेंस को स्टेबल कर देता है और उसके पीछे गिरने से रोकता है। तो वो आपने अपने पास एट हैंड अवेलेबल रखना है वगैरह वगैरह। तो जो कॉम्प्लिकेशन आप फोर्स कर रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए आपने अपने पास एक स्ट्रेटेजी बनानी है। सेको करते हुए आपने जो वैक्यूम है वो लो रखना है, इरिगेशन लो रखनी है। तो ये वो स्टेप्स हैं जिनको करके आपने सर्जरी करनी है। बट यू मस्ट टेल द पेशेंट ड्यूरिंग काउंसलिंग कि देखें जी आपका चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, इसलिए यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। So since it is a very interesting condition, so I have picked it up as a first condition to discuss. तो I hope कि आपको जो आज मैंने पढ़ाया है वो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। In coming week यानी नेक्स्ट वीक में वी हैव 3 more lectures और हम कुछ और स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं जो यूवीआइटिस की हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उनकी मैनेजमेंट और उनकी ट्रीटमेंट। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब आपके जहन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, नॉट ओनली related to today's lecture but to anything which we have covered in last 3 lectures, so you're welcome, you can ask me and I'll be more than pleased to reply. How many of you have gone through your textbooks? आप में से कितनों ने पार्सल में जाकर ये यूवीआइटिस पढ़ा है? No question. Very good. इसका मतलब है कि आई एम अ वेरी गुड टीचर एंड वॉट एवर आई एम टेलिंग यू यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, और आई एम अ वेरी बैड टीचर कि जो कुछ मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ भी आपको नहीं समझ आया। एनी हाउ, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो यू कैन आस्क मी, आप बगैर किसी हिचकिचाहट से पूछ सकते हैं। आई होप यू पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इन दीज डेज, ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, खासतौर पे जो बॉयज़ हैं आप लोग घर के अंदर हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड वॉश वगैरह वगैरह वट एवर
प्रिकॉशंस आर देयर, वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है। सो आई विश यू ऑल हैप्पी एंड सेफ स्टे एट योर होम, और अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी ठीक हो, सो दैट वी कैन गेट टुगेदर अगेन, राइट। इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन, देन खुदा हाफिज फ्रॉम माय साइड, एंड वील सी यू इंशाल्लाह अगेन।